Hello dear students, welcome to the class of Digital Electronics, and in this session we will discuss the topic which is logic gates, right? So in lectures में जो हम start करेंगे वो basically हम start करेंगे basic concepts से and gradually we will move to the advanced concepts like for the which will be required for gate as well as net exam, right? Okay, चलिए शुरू करते हैं तो. So first topic is under your logic gates. Firstly, we will see how many logic gates are there. So first gate is AND gate. Second one is your OR gate. The third one will be NOT gate. The fourth one will be your NAND gate. Fifth one will be your NOR gate. Sixth one will be your XOR gate. And the seventh one will be XNOR gate, right? So these are the gates that are available, right? And out of these gates, these two gates, NAND and NOR gate, these are called universal gate. In the upcoming lectures, we will see why they are called the universal gates. At this moment, remember this is an important question that is asked in the vivas or in the competitive exams, right? Okay, so let us discuss all these gates one by one. So first gate, let's start by the first gate, which is AND gate. Okay, so in case of AND gate, what is the symbol of AND gate? This is asked. So symbol of AND gate is like this. It will have two inputs and it will have one output, right? So A and B are the two inputs and Y is the output. And its output is further equal to, how to calculate its output? So Boolean expression is A dot B. So output is calculated by the product of both the inputs, right? So whatever, in this case we are considering two inputs, so the output is equal to the product of two inputs. Otherwise, suppose in the GATE exam or any competitive exam, if they are giving you more than two inputs, in that case you can suppose A, B and C are the three inputs, then your expression for Y will become A dot B dot C, right? Clear? Okay. And it can also be written like this, so it can also be written like A intersection B. Okay, so next thing is your truth table. In case of AND gate, next thing that we will discuss is the truth table. So truth table, we have, in case of truth table, we write generally the inputs on the left hand side and output on the right hand side. Okay, so inputs in this case we have, so क्या क्या inputs हैं हमारे पास? A and B are the inputs and Y is the output. और output को कैसे हम calculate करते हैं? Y is equal to A dot B AND gate के केस में, right? चलो एक टेबल सा बना लेते हैं. So let's quickly draw it. सो कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं? अगर सपोज हमारे पास दो इनपुट्स हैं जैसे इस केस में, सो कितने केसेस हो सकते हैं? लाइक प्रोबेबिलिटी, इफ यू हैव स्टडीड प्रोबेबिलिटी, इफ यू हैव टू इनपुट्स, सो मैक्सिमम 2 raised to power n, and is here 2, and is number of inputs, so 2 raised to power 2 will be 4. so 4 केसेस क्या क्या हो सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 and 1 1, राइट? बिकॉज बाइनरी इनपुट्स ही हो सकते हैं. सो बाइनरी मीन्स सिर्फ दो ही इनपुट होंगी. सो 0 0 मीन्स 0 डॉट 0. आउटपुट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम? A डॉट B से ना, मीन्स प्रोडक्ट होगा, जितने भी इनपुट्स होंगे उनका प्रोडक्ट. सो 0 डॉट 0 मीन्स 0 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0. सेकेंड केस में 0 and 1 are the inputs, so 0 multiplied by 1 is also 0, and third case 1 0 1 0 is also 0, and in the last case 1 1 is equal to 1, right? So these are the 4 cases that are possible. So ultimately आपने इस ट्रुथ टेबल से क्या सीखा? देखो ट्रुथ टेबल एज सच बहुत सारे स्टूडेंट क्रैम कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली इशू कहाँ पे आता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राइट? सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको क्या नेसेसरी है कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, राइट? सो अल्टीमेटली आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमारे पास सभी इनपुट्स 1 होंगी, राइट, in only in that case the output will be 1, right? In all other cases the output is 0. ठीक है, चाहे अगर एक या एक से ज्यादा
जितने भी इनपुट, सपोज ये तो अभी हम 2 इनपुट वाला केस ही कंसीडर कर रहे हैं। सो 2 इनपुट वाले में अगर एक इनपुट 0 है या फिर अगर दोनों भी 0 हैं, तो आप देख सकते हो कि आउटपुट क्या आ रही है, 0। सिर्फ एक ही केस है जो कि लास्ट केस है, उसमें आउटपुट 1 आ रही है। तो इससे हमने क्या सीखा, लास्ट केस से हम क्या सीख रहे हैं कि जब देखो जनरलाइज्ड वे में याद रखते हैं ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए अगर गेट में तो आप सोल्व कर सको, ठीक है। सो अगर जितनी भी इनपुट्स हैं, इस केस में तो चलो 2 हैं, बट अगर गेट के एग्जाम में या किसी और एग्जाम में अगर एक से ज्यादा इनपुट, सपोज 3 इनपुट आ रही हैं, 4 इनपुट आ रही हैं, तो जितनी भी इनपुट्स होंगी अगर वो सब हाई हैं, हाई मीन्स ओके, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं बता देता हूँ कि 1 का मतलब होता है हाई एंड 0 का मतलब होता है लो, राइट। सो लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्मॉल पल्स टाइप देखें, सो 0 मीन्स ये लोअर एंड ऑफ द वेवफॉर्म एंड 1 मीन्स हाई अपर एंड ऑफ द वेवफॉर्म, राइट। सो 2 ही कंडीशंस पॉसिबल हैं बाइनरी केस में, 0 एंड 1। सो अगर जितनी भी, अगर सपोज अब आप समझ गए होंगे 1 का मतलब होता है हाई। सो अगर हम अब लास्ट वाले केस को, इस ट्रुथ टेबल को जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर सारी इनपुट्स हाई होंगी, उसी केस में हमारी आउटपुट क्या आएगी, हाई आएगी। हाई बोल लो या 1 बोल लो, राइट। और बाकी सभी केसेस में क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर? ओके, चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 2 केसेस हैं जहां से क्वेश्चन बनता है जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो लेट अस राइट फर्स्टली द केस 1। सो केस 1 में क्या आता है, सपोज आपको एंड गेट दिया है, राइट। सपोज आपको ये एंड गेट दिया है, दिस इज द सिंबल and this is suppose the first input is a and the second input is 1, right। और output है आपके पास y, okay। So y output will be equal to, so they will ask what will be the y input। I will mark the question mark here that what will be the y output। So calculate करने की कोशिश करते हैं, ओके। जैसे हमने लास्ट टाइम पे ट्रुथ टेबल बनाया था वैसे ही कोशिश करते हैं। सपोज ए, और मान लेते हैं कि ये जो 1 है ये बी इनपुट है, राइट। चलो, सो देखो बी इनपुट तो हमेशा 1 ही है। ए इनपुट क्या हो सकती है, इनपुट यहाँ तो ये भी कोई वेरिएबल है, राइट। सो ये ए वेरिएबल क्या हो सकता है, यहाँ तो 0 हो सकता है। ए कैन आइदर हैव द वैल्यू 0 और ए कैन हैव द वैल्यू 1। यही 2 केसेस पॉसिबल हैं। बी तो फिक्स है ना हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली ट्रुथ टेबल नहीं पूछेंगे या सिंबल नहीं पूछेंगे, राइट। सो अगर एक इनपुट 0 है दूसरी 1 है तो आउटपुट क्या आएगी, 0.1। अब हमें पता है कि y कैसे कैलकुलेट करते हैं, a डॉट b से, है ना। सो a अगर 0 है b 1 है तो 0.1 0 आ जाएगा, और अगर a 1 है b 1 है तो आउटपुट क्या आएगी, we know that if both the inputs are high output will be high for sure, right। सो इससे हमने क्या सीखा, देखो अब इस एक्सप्रेशन से हम क्या सीखे। अब ऑप्शन होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लाइक सपोज इन द गेट एग्जाम और सम अदर एग्जाम 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, राइट। सो दे कैन हैव गिवन द ऑप्शंस कैन बी, they can have given the option like A option can be 0, B option can be 1, C option can be option Y. They can ask like Y output will be right. So options will be A 0, B 1, C will be A, D option will be none of these, right. So which answer is right? So you can, if you see it carefully, you can see that this A, this is the A. It is having, whenever a is having value 0, output is also 0, and whenever a is 1, output is also 1, right. If you see this carefully, so if a is 0, output is 0, if a is 1, output is 1, right. So means output is directly equal to the value of a, right. So the answer, correct answer will be A. Clear? Concept clear? I hope you understood this concept, right. If still you have the doubts, you can ask in the comment box if still you haven't understood this. Okay, then we will discuss the second case from where the question can be asked. The second case can be, suppose you again have the AND gate, and suppose you have the 2 inputs again. In this case, again one input is A and the other input is 0, and suppose this is ground, ground means 0, right. Okay, and let us assume, okay, let us draw the output first. So, and again they will ask what will be the value of y, okay.
So in this case, let us assume it to be B. So if you have A and B and the output is Y which is equal to A dot B. So let's try to calculate. So again the question will be Y output, this can be the question, Y output will be, I'm giving you the idea so that you will not get confused during the exam, because sometimes when you see these kind of questions directly in the exam, you get confused. As such, these questions are easy, but in the competitive exam, you generally get confused because there is a time constraint as well. Okay, let us assume the same options. Okay. So in this case, again, what is the value of B? B is fixed. B, because B is 0, so it will be 0 always. And let us assume A. So what will be the value of A here? A can have two values. Either A can be 0, because A is not fixed, now, is a variable. So variable can have the value 0 or 1. So let us try to calculate the output again. So 0.0 will be 0 and 1.0 will be 1.0 will be 0 again. So you can see in all the cases the output is, in all the cases the output here is 0, right? So you can see, so it hardly matters whatever A is, and the output will always remain 0. So what will be the right answer? So the option A will be right answer, because in all the cases the output is 0, right? Okay. And one more important thing, one more question that can be asked, right? What is the IC number of the AND gate? So AND gate IC number, AND gate IC number is 7408, right? So we will see this in detail, this IC number, as the concept of this IC in the practical lab sessions. In the upcoming lectures, we will have one video which will be dedicated to this. So thanks everybody, thanks for the session, for this AND gate tutorial. I hope you like this video. If you like this video, please do like, share and subscribe. And still, if you have any doubt, you can ask in the comment box, or you can mail. The mail ID will be given in the description section, right? Okay, thank you everybody, thanks for the sake.